In Indian-occupied Kashmir, there's a law that allows soldiers to kill with legal protection. This is called the Armed Forces Special Powers Act, and it effectively gives legal immunity to Indian soldiers in so-called disturbed areas. Occupied Kashmir is one of them. Since a popular uprising against Indian rule began in the 1990s, India has poured hundreds of thousands of troops into Kashmir. Since then, there have been numerous instances of massacres, arbitrary detentions, and sexual violence on the part of the Indian forces. These are war crimes, yet there has rarely been any prosecution for the behavior. This is all thanks to the Armed Forces Special Powers Act. There are numerous victims of Indian military impunity. Here are a few testimonies. The first comes from the mother of Shoaib Ahmad Ganai, a civilian shot dead by the Indian Army. मैं सोच बह द्रायस मे वुच दार कि नजर अत मे पन दुकान बंद बस दपान अस क्या गो दुकान अचानक बंद यह क्या दलील बह चाहस अथ कमर यथ कमरस बिहित बह चाहस अथ कमरस मे दिस दार कि नजर अत मे लोग जमा लोग वुचम जमा इन बह दपान और क्या दलील अत वुच अत कर सारे दुकान ये कलस बंद इन क्या दलील मे आव लकुट निक मे पस हना और क्या दोपन मे मम्मी पाई मे पस खेवान मे ना पाई दोपन क्या दपान बराज पर आर्मी ये वो आर्मी बह वोसस इथे पे हपर खोरन वो द्रोड़ सड़क पे वो निक सह पढ़ान कहमे मे पस करो दुकान जो बंद क्या दलील अम वो मे दोपन आर्मी वाले लोगमुत शेबस फायर यीच मे पता बेगुना मान कोर्क मे नेचो कोर बेगुना शहीद मे पे वो इंसाफ मे गवर्नमेंट नौकरी जरूरत क्या मे मान रोपये गवर्नमेंट जरूरत कह मे पे गो इंसाफ. The next testimony comes from a woman who was beaten by Indian forces. Her brothers were detained and tortured in the aftermath. घर के कोर में आलस आर्मी तम खत दीवारों पे बार पे गेट पे तो कड़ुक गेट यल अंदरम बार मेन बार तथ दुतक लह तो फुट्रोक तो चाय अंदर नाल सनिक था चटिक मेस बस अकिस पलो बेस फाटो कल मे वन मोज लगो खोर वोनमुख मे तुम बूझो कड़ कत मे कोर तम उर्दू तमो तोर तो तुम वनो दलील क्या कड़न ये चंद मज लिस्ट. Very rarely are human rights violations committed against the Kashmiri people reported, and India continues to invoke the law to avoid any consequences. And don't just take this from me. Take this from the United Nations, who has consistently demanded that India remove the law from its legal code. Take it from rights groups like Human Rights Watch, Amnesty International, and the Human Rights Documentation Center, who have all repeatedly condemned the law. In Indian-occupied Kashmir, even when the guilty are known, they remain unpunished. There can be no justice without accountability. For more information on the Kashmir occupation, follow us and check us out at kashmirawareness.org.